Also, you can send the answers in chat also. There is no issue. Ahmed, did you watch the lecture? Last class का आपने पूरा complete कर लिया था? I can't hear you, Ahmed. Fatima, correct answers. Also, Ahmed, the assignment that you have sent, it is like very light. मतलब समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है बहुत जगह. Yes, Sara, correct. What have Ahmed? Oh, you have not answered also. I can't hear you also. क्या हो गया? So yes, guys, you are right for all of these questions. Sn1 is having one order reaction. This is second order reaction, and Sn1 occurs via formation of carbocation. Okay, Sn1 occurs via the formation of carbocation. The last lecture we started with the factors affecting Sn1 or Sn2. Okay, and that we started with. We'll start with first of all nature of haloalkane. So you'll write the first topic. हेलो सर. नेचर ऑफ हाँ अब आई आपकी आवाज. ओके आपने आंसर नहीं किया था इनका, क्या हुआ? सर आई सेंड ऑल थ्री ऑन chat. किसको किसको? Oh sir, every time I'm sending Learnivio. ठीक है, ओके. सही थे सारे आंसर्स ना? आई होप. यस अहमद. Sir, yes sir. Sir, I'll send it one more. Okay. So in nature of substrate, we will first of all look the reactivity of. We will look at the reactivity of Sn1. At the topic 1, the reactivity of Sn1. Now, the reactivity of Sn1, it depends on the formation of carbocation. If you look at the last lecture, we saw that what is the slowest step here? What is the slowest step here in Sn1? This step is slow, right? Yes or no? Please tell me, guys. The formation of carbocation is slow. Yes, sir. Right? And if this step is going to be faster, that means if our carbocation is going to be stable, then this reaction will be faster. Carbocation will be formed easily. Correct? Makes sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes Yeah. sir. Okay. And that's why you will write reactivity of Sn1
is directly proportional to stability of carbocation. Stability of carbocation. Now, if I talk about the rate of Sn1, then in that case, if I have these following substrate, for example, I have CS3X, then you have CS3, CH2X, then we have CS3, CHX, and this carbon also has a CS3 group here. Then we have, let us suppose, CS3 carbon with 3 methyl groups and the halogen atom. So these are different substrate, different alkyl halides. And the questioner is asking, you have to arrange them in a order of increasing, in the order of increasing rate of Sn1, which is going to give you the fastest Sn1, then next, and then next, like that. So we know that the reactivity of Sn1 is directly proportional to the stability of carbocation. That means, first of all, I will make the carbocation. ना ये अभी यहाँ पे हम लोग बनाएंगे. I will explicitly make the carbocation here so that you understand CS3 positive. And here what I will do, the X negative will leave from here. That is why I will get CS3 and CH2 positive. You see here where the positive charge is getting. And here the CH is going to get positive charge. And here the C is going to get the positive charge. Let me. Out of these three, tell me A, B, C, and D. किसको याद है देखते हैं. Which is most stable? Just which carbocation is most stable? Tell me, guys. किसको याद है देखते हैं. Which is most stable carbocation? याद कीजिए, कॉपी पलटिए तो उधर आपको मिल जाएगा. यस, सारा करेक्ट. लुक एट योर नोटबुक देखिए आप लोग प्लीज. ठीक है, आपको पता नहीं होना चाहिए आंसर. आपको ना सोर्स करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा. हम जब पूछेंगे कि क्यों आप दे रहे हैं आंसर, तो फिर आप बोलिएगा सर आपने इस क्लास में हमें ये बताया था. ओके, look at your notebook. The exact thing is there in the notebook. Okay, exact thing is there in the notebook. I hope Sara and Fatima, you have figured out कि notebook में कहाँ पे है. Yes, Fatima. Yes, sir. ठीक है, बताइए कहाँ पे हो notebook में फातिमा आप. We did a question. कहाँ पे है बताइए दो, मतलब आप फोटो भेजिए हमको. कहाँ पे आपने देखा. Same goes for Sara and Razan also. Send me a photo where we have done similar question and from where you have, like, what is the source of your answer. आप कैसे बोल रहे हैं, जो भी आंसर आप बोल रहे हैं. अहमद, आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर. यू आर सेंडिंग इट टू मी या फिर आप अभी भी. ठीक है Sir, 1 फातिमा. minute, sir. I'm checking. ओके ओके. इसमें तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं दिख रहा है फातिमा. कार्बोकेटाइन तो नहीं दिख रहा है इसमें. क्या भेज रही हैं आप.
I'm talking about stability of carbocation. Fatma, can you please turn your mic on? Yes, sir. Do you see any stability? कहीं stability लिखा दिख रहा है आपको इस पेज में, जो पेज आपने भेजा है? नहीं सर. तो फिर यहाँ पे तो आंसर नहीं है, गलत देख रहे हैं आप, है ना? Yes, sir. देखिए, करेक्ट सारा. रजान वेटिंग फॉर योर सोर्स. आप क्यों बोल रही हैं जो भी आंसर बोल रही हैं? अहमद, आप भी फोटो भेजिए. आप ये आंसर कहाँ से दे रहे हैं, किस पेज से दे रहे हैं नोटबुक के? बिकॉज दिस इज देयर इन योर नोटबुक. ओके, बट स्पेसिफिकली भी आपको ना रजान मिल जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट यही सेम सवाल टाइप से. देखिए, एकदम सेम चीज भी मिल जाएगा आपको इफ यू लुक एट योर नोटबुक. सामिया, अस्सलाम वालेकुम. Ahmed waiting for your answer and Fatima waiting for your answer. सामिया, टाइम पे आप कब आना चालू कीजिएगा? यस सामिया, टेल मी. फातिमा, नहीं मिल रहा आपको? So I'm searching. सर्चिंग कितना, हमने पढ़ाया ही नहीं ज्यादा, आप कितना सर्च कर रही हैं? आपको पता होना चाहिए ना सीक्वेंस क्या था, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, फिर उसके बाद जब हमने कब इंटरमीडिएट्स के बारे में बताया, कब कार्बोकेटाइन के बारे में बताया. यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज इस तरह का सवाल नहीं है ना. अहमद, आप देख रहे हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले का देखिए, आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट सवाल. I found it. हाँ ऊपर, हाँ ठीक है, ऊपर तो है. अ, ऊपर में जो आपने आंसर जो मतलब लिखा हुआ है आपके नोटबुक में, और आपने जो आंसर किया है अहमद, बोथ ऑफ दोज आर डिफरेंट आई थिंक, राइट? लुक एट योर आंसर अहमद. व्हाट यू हैव रिटन इन चैट? कांट हियर यू. फातिमा भेजिए. वेरी गुड, वेरी गुड रजान. Ahmed, I can't hear you. I don't know why. Fatima, you said you found it. Send the answer and send also the photo. Ahmed, I can't hear you. So which will be most stable? Tell me. फातिमा, ABCD में कौन सबसे स्टेबल होगा? D. दूसरी चीज, ये हमने कब पढ़ाया था आप लोगों को? देखिए, सेम सवाल भी हमने दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे, है ना? उसके बाद भी आप लोग आंसर सही नहीं कर रहे हैं.
ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास था, है ना आंसर. Now I will say that this is most stable, followed by the 2 degree, followed by 1 degree, and then this is 0 degree. कोई दिक्कत किसी को? Fatima, tell me. Fatima, Sara, Razan, any problem? No, sir. That is why I will say that if I want to talk about the rate of Sn1 in all of these things, then the rate of Sn1 will be like this. Got it? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Please write an important part here. Order मत लिखिए, rate ही लिख लीजिए. Rate of Sn1. Benzyl halide will be fastest. बताएंगे क्यों? Followed by 3 degree, followed by allyl, followed by 2 degree haloalkane, followed by 1 degree haloalkane. See what happens in benzyl. Please remember, ये benzyl है, हाँ या ना बताइए. Is this benzyl? Yes, Is this sir. benzyl? अरे मार खाइएगा फातिमा हमसे. benzyl halide जाइए देखिए, रिवाइज करके रखिए, ऐसे नहीं चलेगा ना. बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है? एक कार्बन के साथ जुड़ा रहता है ना हाइड्रोजन. यस और नो फातिमा? Yes, sir. फिर भूल जाइए कैसे चलेगा काम. ये आपका हालोअरीन है. दिस इज नॉट बेंजाइलिक हैलाइड, दिस इज aryl halide. This is aryl halide. What is benzylic halide? Benzylic halide is like this. X. X को रिमूव कीजिए, फॉर्म अ कार्बोकटाइन हियर. Now this carbocation is resonance stabilized. We'll have something like this. This will take part in resonance. This positive charge will be delocalized. Spreading of charge, stabilization of charge. Similarly, allylic halide. This is allylic halide. Form a carbocation. CH2 positive. This will also take part in resonance like this. Okay. Now again, spreading of charge means what? Spreading of charge means delocalization of a charge. It is meaning that it is going to be stable. Okay, this is going to be stable, resonance stabilized. So benzyl halide will go to Sn1, then 3 degree, then allyl, then 2 degree, then 1. 3 degree में it is greater than allyl because allyl has only 2 resonating structure, and the 3 degree alkyl halide has 9 alpha hydrogens, because all of these hydrogens will be able to give electrons. Okay, and that is why it is more stable. अब जिन लोगों ने अभी तक हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह का लेक्चर नहीं देखा और जल्दी से देखिए, तभी आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा. ओके. Done everyone? Yes, sir. Right, next. Rate of Sn2. We are doing this in blue. Oh, sorry, wait a second. Sir, could you just go back up for 1 second? Sure. Reactivity of Sn2. Okay, Ahmed, fine. Yes, sir. For reactivity of Sn2, please write. It depends on the nature of
depends on the nature of bulky group attached at alpha carbon. Okay, attached at alpha carbon. What is alpha carbon? Please write alpha carbon. Carbon directly attached to halogen. ठीक है, the carbon atom in which halogen is attached, that is known as alpha carbon. उस alpha carbon में कितने bulky group हैं, that will determine the reactivity of Sn2. It is right. Next point, as number of alkyl group on alpha carbon increases, it will hinder the incoming nucleophile. Due to this steric hindrance, the reactivity of Sn2 decreases. If I talk about rate of Sn2, let us say we have CS3X, CS3, CH2X, CS3CH, CS3, X, now tell me in the A case, how many carbons are attached on alpha carbon? How many carbons are attached at alpha carbon? Identify the alpha carbon first of all. सबने identify कर लिया? Yes or no? Please tell me. Did everyone identify the alpha carbon in the A case? क्या हुआ? किसी को जवाब नहीं देना है क्या? Yes, sir. What about others? फातिमा, सामिया, सारा, आप लोग को नहीं नजर आ रहा है? अल्फा कार्बन नहीं नजर आ रहा है? देखिए, हर जब हम सवाल पूछते हैं ना तो दो आंसर हो सकते हैं उसके. डिड यू आइडेंटिफाई द अल्फा कार्बन? यस या नो, है ना? आई डोंट थिंक यस यानी कि आप लोग को आइडेंटिफाई करना आता है. नो यानी अगर आप लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो नो बोलिए. किसी को कोई चीज नहीं आती है तब तो हम नहीं डांटते ना किसी को. तो आप लोग ये बोलने से क्यों कतराते हैं? फिर एक टाइम आएगा हम पूछना बंद कर देंगे, आप लोगों से सिर्फ पढ़ाने लगेंगे. All of you identified the alpha carbon, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. In the A case, how many carbons are attached to the alpha carbon? 1. How many carbons are एक ही आदमी आंसर कर रहा, बताइए. How many carbons are attached to the alpha carbon? A case में how many carbons are attached at the alpha carbon? A case में फातिमा बताइए, अल्फा कार्बन कौन सा है यहाँ पे? ये अल्फा कार्बन है? Yes, sir. इस पे कितने कार्बन लगे हुए हैं? No carbon. तो दो क्यों बोल रही हैं आप? 0 carbons are attached. In the B case, how many carbons are attached at alpha carbon? 1.
सी में 2, एंड डी में 3. Okay. Now you guys will tell me nucleophile will face difficulty on attacking which carbon atom? D वाला या A वाला, कहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी इस कार्बन को अप्रोच करने में? बताइए, द D1 और द A1, कौन सा अल्फा कार्बन इज मोर hindered, which is having more number of barriers? Please tell me guys, which carbon, A or D, which is having more D. steric hindrance? D carbon, right? And that is why nucleophile cannot attack the D carbon. The easiest attack will be on the A carbon. That is why this will be the rate of Sn2. Is that clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Okay. So similarly, it is 0 degree, 1 degree, 2 degree, and 3 degree. So here 1 degree is the fastest, followed by 2 degree, and then followed by 3 degree. Very simple. ठीक है? All of you understood this? Yes or no? Please tell me, guys. किसी को समझ नहीं आया तो फिर बताइए. Yes, sir. Send the answer in chat. बस आपको क्या करना है, Sn2 में आपको देखना है 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, और उसमें देखना है जिसकी ज्यादा डिग्री है वही ज्यादा क्या होगा, दैट विल बी स्लोअर. ए और बी में आंसर बताइए कौन सा होगा यहाँ पे. सेंड दी आंसर इन चैट. ओके, सेंड दी आंसर इन चैट. ओके सारा. That will undergo faster. Okay. Samia has answered. Samia, can you please tell me A की डिग्री क्या है? What is the degree? 1 degree, 2 degree, 3 degree. A is 1 degree, 2 degree or 3 degree. And what about B? B is 1 degree, 2 degree or 3 degree. Which is faster? 1 degree, 2 degree or 3 degree? Samia, which is faster in Sn2? आपने बी आंसर क्यों किया था फिर? हम जो सवाल कर रहे हैं यही सवाल आपको खुद से करना, हम कुछ बता नहीं रहे हैं आप लोग को. ओके,
So you have to focus more on my questions rather than your answers, और उनको चीजों को याद करने से ज्यादा आपको सवालों को याद करना चाहिए जो हम पूछते हैं. When I ask you questions, you say the right answer. That means you should remember my questions. कि हम क्या सवाल करते हैं आप लोगों से. A will undergo faster because it is 1 degree and this can be attacked more easily. Okay. Now write another question. Now this is Sn1. Which will be faster? Let us write this is A and this is B. Okay, Sarah. Okay, Ahmed. If you're not understanding, please make a carbocation and then check whether which is 1 degree, 2 degree और stability देखिए carbocation का. Oh, Mariam is here. Good evening. Assalamu alaikum, Mariam. How are you? Good evening, sir. I'm fine. You're back. No, sir. I'm just sick. I couldn't join early today. Okay. So where are you right now? Riyadh, sir. Okay, so you're back for the tournament, I think. Yes, sir. But you went to Makkah for a while, right? Yes, sir. I was Then back again. when I went back. And you are also sick or what? Yes, sir. I just got viral fever yesterday. तो घर जाइए, टूर्नामेंट में क्या रखा हुआ है? बीमार पड़ गए, टूर्नामेंट खेलना है आपको. Yes, sir. Inshallah. Fatima, send how did you got to that conclusion? Send me photo. आप उस कंक्लूजन में कैसे पहुंचे या फिर एक्सप्लेन इट टू मी जैसा भी आपको बेहतर लग रहा हो फातिमा. Sir, the first one is 3 degree and the second one is 2 degree. So that's why. तो उसके आगे बताइए ना. 2 degree is more stable, so that's why 2 degree will undergo faster reaction. हम आपको भगा देंगे क्लास से, बता रहे हैं हम आपको. 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है. आप बार बार एक ही गलती कर रही हैं. ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री. कौन ज्यादा स्टेबल है? 3 degree, उसके बाद 2 degree, यहाँ पे कौन स्टेबल होगा ज्यादा? 3 degree, ए या बी? A, कौन ज्यादा फास्ट जाएगा? A. राइट अनदर क्वेश्चन. Which of the following would undergo Sn1 faster?
See here, in both the cases, what you are going to do, you are going to make the carbocation. You'll get a carbocation like this. Here I will get a carbocation like this. All of you agree with this? Yes or no? Please tell me, guys. Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes. Now this is 2 degree. This is also 2 degree carbocation, but it is also having resonance. Can you see that? A double bond B, single bond C, and C has a positive charge. Right? So it is also resonance, 2 degree and resonance. So which will be more stable? 1 or 2? 2. Which will be more? 2 will be more stable. Okay. So we'll write that 2 will be faster. Write the next question. Send the answer in chat. Okay. This is 1. This is 2. Which will be faster? Okay, Sarah. Okay, Fatima. Those who are confused, please make the carbocation. Okay, Ahmed. Again, the answer here will be, this is also 2 degree, this is also 2 degree, but it is more importantly, it is having resonance. Okay. Write the C case. Okay, Fatima.
waiting for Sara, Razan. अहमद आपका मिल गया. Okay. Now this is 1 degree and resonance. More importantly, this was allylic, right? Allylic. And this is 2 degree. Which is more stable, allylic or 2 degree? Please see in the rate of Sn1 and then tell me the answer. You have just done this. Benzylic. हाँ. देख के बताइए. Which is more stable, allylic or 2 degree? Which is more stable, allylic or 2 degree? Yes, Fatima. Ahmed, which is more stable, allylic or 2 degree? Allylic is more stable. See. Benzylic halide 3 degree, then allyl, then 2 degree, and then 1 degree. Okay. So here, one will be faster. Now write another question. Look here. All of you, please look here. What are these molecules, by the way? C6H5CH2Br. This molecule, A molecule is okay. This is A. Now I'm going to write this benzene ring as pH. So this is pH C6H5. देखिए ये आपका क्या है pH है. Then you have carbon atom. Then you have CH3. So write here for B. देखिए ऐसे ही हम लिख देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं. Here you have C6H5. Then you have carbon. This carbon has CH3 group. This is going to be Br. Okay. C. So if you look at C, C6H5, CH and C6H5. That means it has two C6H5. And I'm going to write the structure as carbon atom with a Br, and the same carbon atom is having what? C6H5. Okay, Br. This is the C structure. In the D structure, what do we have? Oh, sorry. Wait a second. यहाँ पे CH3 भी है, C6H5 भी है. Okay, fine. This is the D structure actually. हमने पूरा structure नहीं देखा. This is the B structure. It has a CH3 as well as C6H5. यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं D वाले structure में. Br. It has a CH3 group also and it has a pH group also. pH मतलब benzene वाला group है आपके पास. All of you got this? Yes or no? Please tell me the structures. I hope it is fine. CH and CH3. Yeah. All of you got the structures? Yes or no? Please tell me. Yes. Okay, fine. अच्छा. यहाँ पर जब ये, if it is going to give me positive charge here, right? Sn1 का पूछा है ना? What they want? Order of Sn1. So I'm going to write this is what? This is stabilized by resonance, right? This one is having resonance, and how much resonance? 2 resonance, because there are 2 benzene rings. Can you see that? Yes or no? Please tell me, guys. Can you see that? Yes. And also it is what? It is 3 degree. See this carbon atom, alpha carbon, it is connected to 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. So I will write 3 degree also. Clear as सबको? Yes or no? Please tell me, guys. Yes or no, guys? Please tell me. Yes. 2 resonance and 3 degree. What about here? How many times resonance? How many times resonance? 2 times, right? 2 times resonance. And how much degree? 2 degree only. Correct? Yes. Yes or no? 2 degree. What about here? How many times resonance? 1. 1 time resonance, and it is what? 2 degree. Okay. So which will be more stable? Which will be most stable? Tell me, guys, which will be most stable? Like obviously this, there will be competition between this 2 resonance and this 2 resonance. बाकी में तो एक resonance है, right?
So obviously when you are having more resonance, that means there will be more delocalization of charge, that means there will be, हाँ, so इन दोनों में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ऐसे देखिएगा आप लोग, ओके, प्लीज सी लाइक दिस। अब जितनी इंफॉर्मेशन आप सब लिख लीजिए। आपको हम फिर से बता रहे हैं, जो लोग ने आंसर नहीं किया सारा भी आप आंसर मत कीजिएगा, ओके, अदर्स विल आंसर नाउ, ठीक है। टेल मी हियर हाउ मेनी रेजोनेंस, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी रेजोनेंस इन द ए स्ट्रक्चर में, हाउ मेनी रेजोनेंस, ए स्ट्रक्चर हैज हाउ मेनी रेजोनेंस, प्लीज टेल मी। One हाउ मेनी, resonance. वन है ना, यानी वन रेजोनेंस नहीं है, मतलब एक बेंजीन रिंग है तो हम बोल रहे हैं कि एक रेजोनेंस यहाँ पे हो सकता है। एंड हाउ मेनी डिग्रीज, 1 डिग्री। Yes. B is having how many resonance and how many degrees, tell me? B is having One resonance. And 3 degree. 3 degree. What about C? Two resonance. 2 resonance and what Two degree? degree. 2 degree. 2 degree. And here what is? One resonance. And 2 degree. 2 degree. ठीक है, तो obviously बात है, first of all there will be competition between B and C. I hope everyone is clear with this because resonance will be more stable. अब यहाँ पे 2 resonance वाले 2 है हमारे पास। Got it guys? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Now see, I will cancel because both of them are having 2 resonance. That means the decider of the game will be the degree. Yes or no? 2 resonance तो दोनों में ही है, right? 2 Yes. resonance belongs to. So now which is more stable? 3 degrees more stable. Got it guys? Yes or no? Please tell me. Yes. So the most stable will be B and that will be the fastest. After that, obviously C, because that was the competition. Now we have the competition between A and B. Sorry, A and D. Now we have the competition between A and D. Now here you tell me what will I cancel? I will cancel this one resonance and one resonance because one resonance in A also and it is in the D also. Now you tell me which is more stable, 1 degree or 2 degree? E. D is more stable. After C we'll have D and then we'll have A. सबको आया समझ में? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. You write each and everything जो आपको समझ में आ रहा है वहां पे, उसके बाद कंपैरिजन स्टार्ट कीजिए। Obviously resonance is going to be having higher priority. ज्यादा स्टेबल कौन होगा? रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। Okay, now let's move to the next criteria. Let's move on to the next criteria. अच्छा, before that write a note, which is quite important note. Please write. Alpha unsaturation. Alpha unsaturation always decreases the reactivity of Sn1 and Sn2। दोनों की रिएक्टिविटी को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। Why? First of all, right, in Sn1 देखिए अल्फा अनसैचुरेशन क्या होता है? अल्फा अनसैचुरेशन एग्जांपल देते हैं आपको। Which is alpha carbon here? Tell me 1 2 3 4 5 में which is alpha carbon? 1. 1। ठीक है, तो देखिए 1 में आपके पास क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए इस तरह से। फॉर एग्जांपल्स, which is alpha carbon? 1. 1 में डबल बॉन्ड आ जाए। Which is alpha carbon? इसमें 1. आयोडीन लगा हुआ है, राइट? 1 अभी तो लिखा ही नहीं फातिमा, हम 6 से स्टार्ट कर देते तो 6 5 4 3 6. 2। हाँ ठीक है। नाउ इसका अगर हम in any of the cases if I will make the carbocation, okay, I have made the carbocation and carbocation it has what? sp2 carbon. This is sp2 carbon, yes or no? अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड तो sp2, 0 डबल बॉन्ड तो sp3। ऑल ऑफ यू नो दिस, yes or no? Please tell me guys, याद है? Yes. Hybridization, I hope you guys remember, and also you should remember sp2 का
Electronegativity ज्यादा होता है because it has more s character. If it has more s character, it is nearer to the nucleus. If it is nearer to the nucleus, then it is able to pull electron more easily. That means sp2 is what? It is more electronegative. Yes or no? Please tell me. याद आया नहीं याद आया? sp2 is more electronegative. ये भी पढ़ाया है भाई. आप लोग ऐसे शांत हो जाते हैं, बिल्कुल इतना मौन हो जाते हैं आप लोग कि क्या बताएं हम. दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अरे याद है किसी को? नहीं याद है. माइनस साइन ग्रुप में बताया था ना. इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. कौन ज्यादा? sp2 is more electronegative element, more electronegative carbon. Now if you will put a positive charge near to electronegative atom, what I am doing, please tell me guys, please repeat, what did I say? What I am doing, I am putting a positive charge near. Electronegative. Now what is the purpose of electronegative atom? It will pull the electron. Yes or no? What it will do? Electronegative atom will, please say, जो लोग माइक ऑन करके नहीं बोल रहे हैं वो अपने बैठे हुए रूम में प्लीज बोलिए, याद रहेगा तब. ठीक है, ये तो खत्म कर देगा, हम पागल हो जाएंगे आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते. ये चीज प्लीज बोलिए जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं. Electronegative atom will pull the electron. Yes or no? Yes. Yes, sir. If it is going to pull the electron, then it will increase the positive charge or decrease the positive charge? In decrease. It will increase या decrease? अरे साफ साफ बोलिए. Increase. Increase the positive Decrease. charge, right? Increase, decrease. लॉजिक पे चाहिए आपको, ठीक ना? रटा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य रखिए. पूरा आंसर इस तरह से किया जाता है, ठीक है? जब हम आप लोग सवाल पूछे, लॉजिक नहीं, आप लोगों को याद नहीं है ना, अगर ऐसे सोचिए. आई एम पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. तो हम कौन सा चार्ज पुल कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Negative. Oh, sorry. अरे Negative. इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है. इलेक्ट्रॉन क्या Sorry, चार्ज sir. होता है? Sir, I mean negative. हाँ, Yes. इलेक्ट्रॉन का. हाँ, व्हाट आई एम पुलिंग, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज? Negative charge. नेगेटिव चार्ज. इफ आई एम पुलिंग द नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा ना. नेगेटिव आप निकालिएगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा. यस और नो गाइस? प्लीज टेल मी. Yes, sir. So what is happening? The positive charge is increasing. If the positive charge will increase, then stability will. If charge का density increase करता है तो stability क्या होती है? What happens to stability? If charge increases, stability को क्या होता है? कुछ नहीं पढ़ाया आप लोगों ने, है ना? पता नहीं आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं. आप लोग को आ भी नहीं रहा है. आप लोग को पढ़ाया उसके बावजूद आप लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं. इसमें क्या है? अरे कब पढ़िएगा आप लोग? बंद कर देंगे हम आप लोग का बैच, बता दे रहे हैं सच में. हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते वैसे बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते हैं. क्या है यहाँ पे? चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा स्टेबिलिटी को? Decrease. 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 जब स्टेबिलिटी घटेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? स्टेबिलिटी घटेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा? नहीं. अरे कोई नहीं बनेगा. अनस्टेबल चीज नहीं बनती है ना. अनस्टेबल चीज नहीं बनती है तो कार्बोकेटाइन नहीं बने. अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो SN1 होगा. द कार्बोकेटाइन विल नॉट बी फॉर्म, देन SN1 होगा. यस और नो? टेल मी. No. नो, No, SN1 sir. नहीं होगा. SN1 से तो हो नहीं सकता ये, राइट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए वी हैव टू ऑप्शंस. Either it can go through SN1 or it can go through SN2. Now will SN1 happen? Yes or no? No. Why? Because there is no stability. No stability in the carbocation. Very good. Now let us take nucleophile and let us attack in the way of SN2. In SN2 what happens? The Br is not leaving right now. Nucleophile will come, it will attack here, उसके बाद ही Br भागेगा. Yes or no? This happens? Yes or no? Please tell me guys. Yes or no? Please tell me guys. This happens, Yes. right? Okay. Nucleophile is what charge? Nucleophile के पास कौन सा charge है? Negative. Negative. Negative charge. And this pi electron clouds, they are also what? Electron rich? Yes or no? Please tell me guys. Yes, If you have pi, right, we have more electrons here. Electron and an electron, nucleophile कभी attack कर पाएगा? These electrons, this pi electron cloud, they will say, go away. Electronic repulsion will take place, and that is why nucleophile cannot even attack on that. So nucleophile cannot attack, carbocation cannot be formed, neither SN1 will happen nor SN2 will happen. Is this clear? Yes or no? Please tell me guys. Yes, sir. SN1 क्यों नहीं हो रहा है? SN1 क्यों नहीं हो रहा है? Nucleophile cannot attack because it is अरे- having negative charge and SN even अरे
आराम से। SN1 क्यों नहीं हो रहा है, सवाल सुनिए आप फातिमा। SN1 क्यों नहीं हो रहा है फातिमा? Stability is not हाँ, good in the carbocation. या SN1 नहीं हो रहा क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा। SN2 क्यों नहीं हो सकता? मोनोलॉग चालू कीजिए अपना, बहुत अच्छा मोनोलॉग जा रहा था आपका, बताइए फातिमा। SN2 क्यों नहीं होगा? Because the nucleophile is negatively charged and the pi bond is also having negative electrons, so that's why it can only repulsion can happen, attraction cannot happen. सबको समझ में आ गया होगा, इतना अच्छा फातिमा ने समझा दिया। यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, यूल राइट। तो समझाते भी आप लोग को, एक चीज लिखाते हैं, प्लीज पढ़िए आप लोग, है ना। इन SN1 the carbocation formed is unstable due to the highly electronegative sp2 carbon atom adjacent to carbocation. Write the next point. In SN2 the nucleophile is repelled by the electron rich pi bond and hence it does not attack alpha carbon. So if you have something like this, देखिए alpha carbon unsaturated है chlorine, so this will be slower than, this will be having faster, this will be slower than this carbon atom which is not having any alpha carbon. ठीक है, तो इसमें SN का ही रेट जो है ना, SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों ही कौन सा फास्टर होगा? द सेकंड कार्बन विल बी फास्टर। ओके, एंड दैट इज आई आल्सो सी देयर दोनों में बहुत ही ज्यादा माइनर डिफरेंस है। क्लोरीन और ये क्लोरीन, एक कार्बन का डिफरेंस है, लेकिन दिस विल बी वेरी फास्ट। यहाँ पर रिएक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए आपको लगभग 600 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होगा। ओके, एंड यू विल रीड समवेयर अराउंड 300 atm ऑफ प्रेशर इफ यू वांट टू डू SN फॉर दिस रिएक्शन। रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, और यही बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा द सेकंड केस। ओके, सबको आ गया समझ में? ये नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लिखिए नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। एक सवाल है, बाकी पहले सारा से करते। सारा, कैन यू अटेंड 9 to 11? Indian time. इंडियन टाइम ओनली? हाँ भाई, इंडियन टाइम। Yeah. या ओके फाइन। व्हाट अबाउट अदर्स, टेल मी, कैन यू गाइज अटेंड फ्रॉम 6? नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़िए, सॉरी सॉरी। अहमद का तो फिर, अहमद आपको नहीं जाना मैथ क्लास? Sir, today he's not taking, sir. He अच्छा, has आज some meeting. अच्छा अच्छा, ओके, नहीं नहीं, छोड़ दीजिए फिर। आप लोगों का क्लास इसी टाइम रखते हैं। एक्चुअली आई विल नाउ लाइक चेंज द टाइमिंग टू 2 hours। ठीक है, ओके, राइट हियर leaving group, please write the leaving group in SN. That means SN यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 हो चाहे SN2,
should be able to bear negative charge. ठीक है, अभी बताइए, what do you think which is more stable, A or B? B. B. बाकी लोग का क्या ख्याल है, A और B में कौन ज्यादा स्टेबल है? Which is more stable between A and B? Sir, B. नेगेटिव चार्ज है, दोनों में नेगेटिव चार्ज है. क्यों B बताइएगा जरा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड B? Why is B more stable? अरे रे रे, आप लोगों को भी नहीं याद? रजान, सारा, हाँ सारा, यू डोंट रिमेम्बर नाउ? सब भूल गई हैं सारा. ये सारा, यू डोंट रिमेम्बर? No, नो, मतलब आपको हमने पढ़ाया ये भी याद नहीं है आपको, या फिर क्या पढ़ाया वो याद नहीं है आपको? I'm not sure which one will be stable. यू आर नॉट श्योर, बट ये पता है कि पढ़ाया जा चुका आपको, है ना? है ना? रजान, व्हाट अबाउट यू? Sir, I don't remember. You don't remember me teaching this? No, sir, this point. हाँ, वही हम बोल रहे हैं, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब साइज का और चार्ज का, चार्ज डेंसिटी याद है, लिखाया था, इसी में लिखा है. ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज हमने 11th में पढ़ाई है, वो नहीं याद हो, कम से कम ये तो याद होना चाहिए. हायर द चार्ज, क्या लिखा है हमने? व्हाट है, क्या लिखा है? चार्ज डेंसिटी, यस और नो? Yes, sir. Sir. देखिए, जनरली डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, करेक्ट? मास बाय वॉल्यूम होता है ना. Yes, sir. डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम. चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज बाय वॉल्यूम. तो बताइए, चार्ज बाय वॉल्यूम कहाँ ज्यादा है, ए केस में ज्यादा है या बी? अच्छा, चार्ज दोनों में सेम है, यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. चार्ज इज सेम ना, Yes. -1 -1. Yes, sir. वॉल्यूम कहाँ पे ज्यादा है? बी में ज्यादा है, ए में ज्यादा है? B, sir. B. B. बी में वॉल्यूम ज्यादा है. दिस होल क्वांटिटी दैट इज रिप्रेजेंटिंग चार्ज डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा अगर वॉल्यूम ज्यादा है? तो इस फ्रैक्शन विल बी, ये Smaller. फ्रैक्शन क्या हो, स्मॉलर ना? बात है समझ में? रजान अंसारा, मरियम, Yes. समझ में आया? ठीक है, इसका एक एग्जांपल जो हम दिए थे आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में ना, आप ये इमेजिन कीजिए, you have a very small coin in which we have, let us say, like, have you seen those high tension where the electricity passes? You have seen those wires, right? Yes or no? Have you seen those wires in which electricity passes? अरे नहीं देखा है क्या आप लोगों ने? हाँ ना बोलिए, इतना time Yes, लगा sir. दिया. देखा है ना? Sir. इसमें मान लीजिए कितना वोल्ट होता होगा, मतलब वो हाई टेंशन वाला जो होता है, इसमें मान लीजिए 10,000 वोल्ट्स है, ओके, 10,000 वोल्ट्स, और एक ऑल द 10,000 वोल्ट इज देयर इन द कॉइन. कभी टच कीजिएगा आप उसको? टेल मी. No. No, sir. अच्छा, दूसरी चीज इमेजिन कीजिए, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार तो गिरा हुआ होगा, लाइव वायर, करेक्ट? Yes. ये सर नो, लाइव वायर किस में टच कर रहा है? अर्थ को टच कर रहा होगा, ये सर नो? Yes, sir. तो करंट क्यों नहीं लग रहा है आपको? अर्थ इज अ कंडक्टर, राइट? ये सर नो? Yes, sir. अर्थ इज अ कंडक्टर, कंडक्ट करना चाहिए था, करंट लगते रहना चाहिए था. कोई आदमी तो कुछ भी नहीं कर पाता, है ना? करंट लग रहा है क्या किसी को अभी? बताइए अहमद, करंट लग रहा है आपको? No, sir. नहीं ना, लगना चाहिए लेकिन. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. लाइक वी हैव दिस वेरी बिग अर्थ. अब उसमें मानिए 10,000 क्या 10 लाख भी अगर आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है,
एंड व्हेन इट समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें क्या होती है ना, व्हेन समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड वो ज्यादा स्टेबल होता है, एंड एनीथिंग व्हिच इज स्टेबल दैट इज नॉट गोइंग टू हर्ट। हम इसका और एक एग्जांपल देते हैं आपको। 9th क्लास कुछ, सॉरी 11th क्लास कुछ याद आएगा सारा को। अहमद आप बताइए, दो सिनेरियो है ना, किस सिनेरियो में आप रहना चाहेंगे? ये अहमद है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा सिनेरियो में आप रहना चाहेंगे, किसी और के साथ हो रहा है मान लीजिए, ठीक है, ये ए सिनेरियो है और ये बी सिनेरियो है। इन ए सिनेरियो यू हैव 1 kg का आयरन ब्लॉक above your head, but the distance between that block and your head is 1 millimeter, and it is going to fall down. Same है आपके पास 1 kg का, and this is going to fall down. और यहाँ पे जो डिस्टेंस है that is let us say 10 meters. कौन से केस में आप खड़े रहना चाहेंगे, ए या बी? सर बी। बी। सुसाइडल है क्या आप? हाँ, आपको सुसाइड करना है क्या अहमद? सर मर नहीं जाइएगा इसमें, ये गिरेगा तो मर नहीं जाइएगा। इवन वन विल फॉल राइट। इवन 1 विल फॉल, तो कहाँ ज्यादा हर्ट चोट लगेगा आपको? ओ यस सर ए। ए राइट। यस। हमको ये सवाल पूछने में बहुत डर लगता है, एक तो आज के जनरेशन के बच्चों से, है ना, पता नहीं कब ये डार्क चले जाए बिल्कुल ही, कि सर हमें तो बी चाहिए सर, बहुत पढ़ाई का बोझ है सर, थोड़ा और बोझ लग जाए मेरे ऊपर, ठीक है, ऐसे ख्यालात मत रखिएगा प्लीज। ऑल ऑफ यू एग्री ना दैट ए इज मच बेटर, Yes. even though if you will take the case B, then people will say that you are gone to a better place, लेकिन I hope that all of you agree that A is better, right? चोट कहाँ देखिए, और आप ये बताइए एनर्जी किसके पास ज्यादा है? दिस इज हैविंग मोर पोटेंशियल एनर्जी, राइट? Yes. करेक्ट? दिख रहा है आपको? द हर्ट प्रिंसिपल, आई कॉल दिस हर्ट प्रिंसिपल। इफ समथिंग कैन हर्ट यू मोर, दैट इज मोर अनस्टेबल, दैट मींस दैट इज हैविंग मोर एनर्जी। इसके पास ज्यादा एनर्जी होती है ना, कुछ लोग बोलेंगे सर ज्यादा एनर्जी तो अच्छा है ना, फातिमा ज्यादा एनर्जी अच्छा है, बताइए हाँ या ना? फातिमा टेल मी, इज Yes, मोर sir. एनर्जी बेटर? हाँ No. नहीं, क्यों? ज्यादा एनर्जी आप क्या चाहती हैं, आपके पास ज्यादा एनर्जी रहे कम एनर्जी रहे? With me, yeah, more energy. अच्छा, आपके पास ज्यादा एनर्जी। आप बताइए, मान लीजिए आपका बॉडी टेम्परेचर है 98 फ़ारेनहाइट और लेट्स से 97 फ़ारेनहाइट, and this is A case 97 फ़ारेनहाइट, and then you have 105 फ़ारेनहाइट B case। कौन से केस में आप रहना पसंद करेंगी फातिमा, ए या बी? A. लेकिन बी में तो ज्यादा एनर्जी होगी ना। That's extra. एक्स्ट्रा, तो वही तो हम आपसे पूछ रहे थे, आपको ज्यादा एनर्जी में रहना है कम एनर्जी में रहना है? टेल मी। Neutral. न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल क्या होता है? यू हैव टू चूज ना, आपने बोला ज्यादा एनर्जी, तो बी में ज्यादा एनर्जी है, राइट? बी इज हैविंग द मोस्ट एनर्जी, बी में नहीं रहना, ठीक है। सो एनीथिंग विच इज हैविंग हायर एनर्जी। अब देखिए आदमी क्या करता है, See, जितना एनर्जी है ना, यू विल वर्क 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 वर्क, आप अपना एनर्जी को कम करने पे लगे रहते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए अपना एक इंसान की अगर हिस्ट्री उठा के देखिए ना, किसी भी इंसान की, देन वो अपना एनर्जी वेस्ट करते रहता जब तक कि वो 6 फुट अंदर ना चला जाए जमीन के। ये सर नो, प्लीज टेल मी, इज दैट राइट? सो यू विल गेट स्टेबल। कब स्टेबल होता है आदमी, कब स्टेबल होता है बताइए फातिमा? When is a person stable? When does a human become stable? Fatima, tell me. What happened, Fatima? You don't know? When will a person become stable? When he has lost all the energy, right? And what happens when he has lost all the energy, Fatima? Fatima, can you not hear me? मेरी आवाज आ रही है बाकियों को? No. Yes. अच्छा ठीक है भाई, हम तो डर ही जाते हैं, आप लोग को आवाज नहीं आ रही है। Okay. So what did I say? I said that the leaving group in Sn should be able to bear, अच्छा bear का स्पेलिंग गलत कर दिया हमने, bear negative charge. In that case,
Write the next point. Larger the size of leaving group, larger the size of leaving is the reaction. Okay, that means if I see, if you have any alkyl group bonded to fluorine, you have RCl, you have RBr, you have Ri, then Ri will be fastest, followed by RBr, and then followed by RCl, and then followed by R. Okay, right, the next point. If something is more, it is a better leaving group, it is more stable, then we say that I negative is a good leaving group. Okay. So यहाँ पे लिख लीजिए, get F negative from here, you will get Cl negative from here, you will get Br negative from here, you will get I negative from here. बस एक example भी लिख लीजिए. For example, you have something like this. Which will be faster, A or B? Which will be faster, guys? B. Correct. अच्छा, आज वाफिया नहीं आई है ना? वाफिया क्यों नहीं आई है? Which will be faster? अच्छा लिखिए आप लोगों ने, which will be faster. Right, next, nature of solvent. Nature of solvent. Now please see, solvent are of two types. We have non-polar solvent and we have polar solvents. Okay, non-polar solvents and we have polar solvents. In non-polar solvent, the dipole moment, that means mu net, will be equal to 0. Will be equal to 0. For example, CCl4, right? For example, CCl4, it is a non-polar solvent. Then you'll have CS2. This is also a non-polar solvent. Now, polar solvent in which you have mu net, which is not equal to 0, that means it is greater than 0. Okay, mu net is what? I should write it right. Greater than 0. Okay, it is greater than 0. Now, these polar solvent can be of two types. One is polar protic and the other one is polar aprotic. Polar protic solvents are those in which obviously mu net will not equal to be 0. Mu net will be greater than 0, not equal to 0. It will be polar, that means. And it should be able to have hydrogen bonding. It should be having what? Hydrogen bonding. Okay, that means H is directly bonded to
ऑक्सीजन, कौन याद कर लीजिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. Okay, H is directly bonded to fluorine, oxygen, or nitrogen. For example, H2O में hydrogen is directly bonded to oxygen. Similarly, CH3, CH2OH, ethanol, ammonia. All of these contain what? All of these contain hydrogen bond. Polar aprotic solvent in which the mu unit will not be equal to 0. That means it will be polar solvent. It will be polar, but it will have no hydrogen bond. There will be no hydrogen bonds. For example, acetonitrile, CH3, Cn. Then you have dichloromethane, CH2, Cl2. All of these are example in which there is no hydrogen bond, but these are polar solvents. These are polar aprotic. Okay, polar aprotic. All of you understood this? Yes or no? Please tell me, guys, about different types of solvent. Yes. Okay. एक बार लिख लीजिए इसको. Let me know when you are done writing this. Yes, sir. Done, everyone? No, sir. 1 second. हाँ, लिखिए आराम से लिखिए. Done, everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. All of you done? Done ना? Okay, ठीक है. Now, see, the important point is in nucleophilic substitution reaction, you will have nucleophile. Correct? Yes or no? Please tell me, guys. You will have a nucleophile, Yes. Yes. right? A nucleophile will be always quite polar. In order to, देखिए nucleophile के example हम देते CH3OH. It is a nucleophile. Okay, so if this is a nucleophile, this will be having delta negative here, delta positive, right? So it will be what? It will be highly polar molecules. Nucleophiles will always be highly polar molecules. If something is highly polar, that means it will only dissolve in what? What is the solubility criteria? It will only dissolve in polar solvents, right? Yes or no? Please tell me. Correct? Nucleophile will be polar and it will dissolve in what? It will dissolve in Polar it will dissolve in solvents. polar solvents. That means we cannot use non-polar solvent. ठीक है, so non-polar solvent का तो सवाल ही खत्म हो गया because nucleophile soluble ही नहीं होगा. Soluble नहीं होगा तो हम reaction कहाँ कराएंगे? Solid state में reactions नहीं कराते हैं. यहाँ पे किसमें कराते हैं? Aqueous state, है ना? Aqueous यानी कि liquid phase में कराते हैं, है ना? We add some solvent and उस solvent में reaction कराते हैं. SN के जितने भी reactions होते हैं. So obviously the polar solvent will be used. Now in polar solvent we have polar protic and polar aprotic. Polar protic and polar aprotic. Now if you look here, let us suppose we have an example like this. Water molecule. Let us take an example of acetonitrile, something like this. We have carbon atom which is bonded to Cn. And it is having 3 hydrogens. This carbon is having 3 hydrogens. So CH3, Cn. This is acetonitrile. This is polar protic solvent. This is polar aprotic solvent, right? It is polar protic, it is a polar aprotic solvent. Now this polar protic solvent, this oxygen is highly electronegative, so this will be delta negative and this will be delta positive, this will be delta positive. And I will writing delta positive, यानी कि काफी positive charges. And here I am writing, this will be having delta positive here and delta negative here because carbon is bonded to electronegative element, that is nitrogen.
But carbon and nitrogen का जो electronegative difference है, that is not very high. But if you compare oxygen and hydrogen, it is very, very, very high dipole moment का difference, and we have a very high difference in electronegativity. Okay. Now, if you look at this particular water molecule, and if you look at a simple nucleophile, अब जब न्यूक्लियोफाइल ऐसे रहेगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेंगे हमारे पास, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? ये डेल्टा नेगेटिव है, हाइड्रोजन आर हैविंग डेल्टा नेगेटिव, देन दिस न्यूक्लियोफाइल इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, so this will be attracted towards the polar protect. Yes or no, please tell me, guys. Correct? Yes. Yes or no? Because it is having highly positive charge, and nucleophile is what? It is negatively charged. It is negatively charged. Same type of thing will happen if you have something like this. अच्छा, एक बात बताइए, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंटरैक्ट करते हैं तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है. Yes or no? Yes. एंड अट्रैक्शन इज स्टेबल. Yes. सही है, Yes, sir. अट्रैक्शन इज स्टेबल. ठीक है. अब इसी केस में देखिए, आपके पास क्या है? कार्बोकटायन. यहाँ पे क्या है आपके पास? इसको हम थोड़ा इधर ले आते हैं, एंड आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग दिस. ठीक है. If you will have a carbocation, this carbocation will be interacting with the O negatives. Yes or no, please tell me. Oxygen molecule, Yes. right? अच्छा, positive और negative में क्या हो रहा है? Interactions हो रहा है. That means all of these will be stabilizing the carbocation. Is that right? Yes or no, please tell me, guys. Yes. That means polar protic solvent is Stable. stabilizing carbocation. Polar protic solvent is doing what? It is stabilizing the carbocation. ना, ये स्टेबल नहीं होता है, कार्बोकैटायन स्टेबल होता है उसकी वजह से. कैन यू सी दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी. फिर से बताएं, Yes. फिर से बताएं. क्या बाकी लोग के आंसर नहीं आ रहे? कार्बोकैटायन है, ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव, तो कार्बोकैटायन एंड डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन दे विल इंटरैक्ट. दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या ना? हाँ या ना बताइए बस आप लोग. इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा. यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. नाउ attraction means attraction will become, attraction will, क्या बोलते हैं उसको, bring stability. Stability. Attraction will bring stability. Now carbocation is what? More stable. Yes or no, please tell me, guys. Yes, sir. अब कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो Sn1 क्या होगा? फास्टर होगा. Yes or no? Sn1 के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है फास्ट होने के लिए Sn1 का? Look at reactivity of Sn1. That I have said that the first point that we wrote na in this class. Reactivity of Sn1 is directly proportional to Stability. अरे स्टेबिलिटी क्या पूरा बोलिए आप लोग? Stability of carbocation. हाँ, वेरी गुड. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बोकेटाइन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन इज गेटिंग more and more stable. That is why in Sn1 the intermediate carbocation, it has more charge, right? It has more charge, and that will be stabilized by the polar protic solvent. Okay, please write here. Write the first point. In Sn1, the intermediate carbocation has more charge, than the substrate, due to which if you take any type of polar solvent also, polar solvent increases the stability of carbocation.
means rate of Sn1 is faster in polar solvents. We'll write next. Sn2 में तो हमारे पास कार्बोकेटाइन होता नहीं है, but in Sn2, the nucleophile क्या है? Nucleophile is reactant. That means reactant is more but in Sn2 the nucleophile has more charge. Has more charge than the transition state. Due to which polar protic solvent interacts with nucleophile and increases its stability. एक बात बताइए, रिएक्टेंट अगर स्टेबल हो जाए, what is your reactant? Reactant is stable. If the reactant is what? Tell me, if the reactant is stable, तो रिएक्शन होगा? नहीं होगा, राइट? रिएक्टेंट ही अगर हमारे पास स्टेबल हो जाए तो रिएक्शन हमारे पास नहीं होता है. न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका? रिएक्टेंट है, एंड in the presence of polar protic solvent it is interacting with the nucleophile and the nucleophile is getting more and more stable, increases its stability, and as the stability of reactant increases, the rate of reaction decreases. Polar protic solvents are used in Sn1 generally speaking, ठीक है? मतलब there are also exceptions sometimes, and polar aprotic solvents are used in Sn2. बस ये थे सारे फैक्टर्स. This was about Sn, general था पूरा, ठीक है ना? Each and everything was generalized, but we have taken examples of only haloalkane, haloarene. बस the concept को समझ जाइए. धीरे धीरे अल्कोहल वाले चैप्टर में सेम concepts we will use, and then we will give the examples for alcohols also. ठीक है? सबने लिख लिया SN2 सलमी? Yes, sir. Okay. हिम्मत बची है? Tell me guys. Sir, done, sir. No, I am asking. एक और टॉपिक ले लें? नहीं सर. ठीक है. Okay. ठीक है. So we'll meet on Wednesday now. पढ़िए ठीक है. आप लोग रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए. जब तक हम डेली का मतलब अब क्या है आपका? डेली का मतलब जिस दिन क्लास है सिर्फ उस दिन नहीं, ठीक है? डेली का मतलब है डेली.